I hope you're doing well today. So today we are back with another topic on debt funds. In this video, we will talk what debt funds are, how is it different from equity mutual funds, what are its different features, what are its different advantages, and why it makes sense for you to have a certain portion of your investment portfolio into this asset class. And by the end of the video, I hope you will be able to make an informed decision if you want to invest in this asset class or not. So I hope you will be with me till the end of the video. Let's begin the video. What is a debt fund? So whenever we talk about a mutual fund, people generally think of an equity mutual fund, right? If I tell you कि चलो इस fund में investment करते हैं, so you will by default go to an equity mutual fund. So equity mutual fund and debt mutual funds are different because they invest in different assets of a company. So if we talk about equity mutual funds, so equity mutual funds invests into stocks of different companies like say a Reliance or an HDFC. But unlike equity mutual funds, funds invests into different asset classes. That is like a bond, a commercial paper, or gilt, any other fixed income securities of companies. So that is how it differs from an equity mutual fund. So debt mutual fund are also a big asset class and is generally being used by more by corporates and HNIs. It's not very popular amongst the individual investors as yet, but it holds its importance, and we will see as the video progresses what are the different benefits of having a certain portion of your investments into debt funds. So people generally invest into fixed deposits for their fixed income needs, and debt funds will offer you a good alternative to that as well. So yeah, so that makes it an important asset class for individual investors who want to have a nice asset allocation in their portfolio towards fixed income classes. And because fixed generally we only know about fixed deposits to have a fixed income to our income stream, but even a debt portfolio debt in fund will serve that purpose. And the return, we will also see what are its return profile and how it differs from an FDs. So just as equity funds are available in different flavors, like we have a large cap equity, a mid cap equity fund, a small cap in equity fund, we also have different sector based funds like a pharma or a tech equity fund, emerging market equity funds. So similarly, the debt funds come in different flavors. They give a huge basket of choices for the investors to choose from. Like we have the long term debt fund or a short term debt fund, we have gilt funds, we have PSU फंड. सो दिस वे इन्वेस्टर्स के पास चॉइसेस रहती है कि उनको किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना है. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, शॉर्ट टर्म फंड विल इन्वेस्ट इनटू assets with a maturity of 1 to 3 years. Gilt fund will invest into government bonds. PSU will again invest into have a focus on government holdings. So like that, these funds are also classified into different flavors for the benefit of the investors कि उनकी जो नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो उस टाइप से इन्वेस्ट कर सके. Now let's take a look at the different features of debt fund after having an idea about what debt funds are and what are its different types. Now let's have a look at its features. So unlike an equity mutual fund, a debt fund generally has a low risk and low return profile. तो अगर आप कि वो एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो का रिस्क प्रोफाइल कम रखना है, तो एफडी के साथ साथ आप एक डेट फंड में भी देख सकते हैं ऑप्शन. कई इन्वेस्टर्स होते हैं बिकॉज एल्डरली पीपल हु आर एडवाइज टू कीप देयर रिस्क प्रोफाइल लोअर, so this debt fund will have a good alternative, good choice for them. However, their treatment is different than an FD. So earlier to March 23rd, they had a lower tax treatment than FDs. लेकिन अब क्या हो गया है कि these debt funds have been now bought at par, and they are being taxed at your respective tax slab rate with no indexation benefit. तो अब ये tax treatment में एक difference आ गया है. अगर दूसरी बात हम देखें तो debt fund का importance क्यों है, जैसे हमने पहले ही बात की कि वो आपका एक fixed income का source बन जाता है. It provides a good flavor, good diversification to your overall portfolio. तो आपका asset allocation और better हो जाता है इस केस में, because of course we know that we shouldn't keep all our investments in one asset
क्लास ओनली, बिकॉज अगर एक एक जगह कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर उसका इफेक्ट पूरे पोर्टफोलियो पे आता है। लेकिन अगर आपने अलग अलग जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट्स डाले हैं तो अगर एक एसेट क्लास में प्रॉब्लम होती है तो दूसरे से वो इट विल काउंटर इफेक्ट, इट्स हैव अ काउंटर इफेक्ट ऑन ईच अदर। तो इसलिए इट इज important to have a diversification in your portfolio, and debt fund is a good alternative to fixed as deposits for having a fixed income need in your asset allocation. So I have made an earlier video on asset allocation, the link of which I will share in this video. So if you want to know more about asset allocation, आप उसको देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे कि क्यों इम्पोर्टेंट है एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में, जैसे कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो वो आपके इक्विटी साइड को डाइवर्सिफाई कर देता। व्हाट इट डज कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो अलग अलग कंपनियों के शेयर्स होते हैं वो आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है अगर आपने वो इक्विटी फंड ली हो। इसी तरह अगर डेट फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो डिफरेंट बॉन्ड्स ऑफ मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो आपको उसका एक्सपोजर मिल जाता है अपने पोर्टफोलियो में। तो इस तरह से ये एक डिफरेंस है इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में। अब अगर हम बात करें कि कौन से बेटर डेट फंड ऑप्शन है, तो अभी एक ईडलवाइस ने नया फंड लॉन्च किया है जिसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, तो आप वो देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन। नाउ डेट फंड कैन गिव यू गुड रिटर्न्स, और पास्ट में उन्होंने 8 to 9% की रिटर्न्स दी है ओवर लॉन्गर पीरियड्स, और इसमें वोलेटिलिटी भी कम होती है। तो जैसे हमने पहले ही बात की कि इसका रिस्क प्रोफाइल कम होता है, तो अनलाइक मार्केट जो ऊपर नीचे जाता है तो आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में फर्क पड़ता है, वो वाला जो आपका रिस्क फैक्टर है वो इस केस में कम हो जाएगा, आपकी वोलेटिलिटी काफी कम हो जाएगी। और अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो 8 to 9% रिटर्न से अगर आप एफडी से कंपेयर करें तो वो भी अराउंड अभी 7 to 8% है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स एंड द टेन्योर यू आर इन्वेस्टिंग इनटू। तो ये आप देखिए ये एक डिफरेंस हो जाता है इक्विटी और एफडी से डेट फंड्स का। So again, और डेट फंड्स आर हाईली लिक्विड एंड इट कैन बी रिडीम्ड क्विकली। तो आपने डेट फंड में पैसे डाले हैं, अगर आपको पैसों की जरूरत है, यू नीड योर फंड, सो यू कैन इजीली रिडीम दीज यूनिट्स बैक इनटू योर बैंक अकाउंट। और ऑनलाइन आप इसको कर सकते हैं, तो ज्यादा इसमें झमेला भी नहीं है। सो इट इज वेरी इजी टू इन्वेस्ट एंड ऑल्सो टू गेट आउट ऑफ इट, एंड इट्स वेरी लिक्विड, तो आपको जब भी फंड्स की जरूरत है आप ये तोड़ सकते हैं। नाउ व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इनटू डेट फंड्स, व्हेन डज इट मेक मोर सेंस फॉर यू टू इन्वेस्ट, शुड यू इन्वेस्ट इनटू डेट फंड्स? अभी इंटरेस्ट रेट का इतना फ्लक्चुएशंस चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो क्या ये सीन है और आपको कब इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो जनरली यू शुड इन्वेस्ट इन डेट फंड्स व्हेन इंटरेस्ट रेट आर हैव पीक्ड and are going down, as it leads to capital gains. तो जैसे interest और capital gains are the two main sources of revenues for a long term debt fund. तो हमको पता है कि जो bond prices होती है वो जो हमारे interest rate changes होते हैं उसके उल्टे direction में चलती है। अगर interest rate बढ़ रहा है तो bond prices कम होता है and vice versa. So equity, these debt funds make more sense and are better than equity mutual funds when it comes to capital preservation. तो अभी हमको जैसे पता है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पॉज कर दिया है, तो जो ये अच्छा टाइम है अगर आप एक लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन डेट फंड में एंटर करना चाहो, और आप इसको अपॉर्चुनिस्टिकली यूज कर सकते हो फॉर योर बेनिफिट टू गेट हाई रिटर्न्स। तो ये अभी इज अ गुड टाइम, इफ यू वांट यू कैन इन्वेस्ट इनटू अ डेट फंड। इसमें आपको वोलेटिलिटी कम होगी, आपका रिटर्न प्रोफाइल बेटर होगा, आपकी लिक्विडिटी ज्यादा है, तो व्हेनेवर यू वांट यू कैन रिडीम योर फंड, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट पीकिंग अभी आपको इसमें बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, बेटर कैपिटल गेन्स की ऑप्शंस हैं तो ये इस तरह से आपको ये वाला एसेट क्लास आप देख सकते हैं इफ यू हैव ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also hope to see you again. Bye. Have a nice day.